Good evening, all of you. Here, chemistry chapter 2, and today topic is chemicals from common salt. As we know how common salt is useful for us, besides this, sodium chloride is also a very useful raw materials for different chemicals, such as for washing soda preparation, hydrochloric acid preparation, baking soda preparation, sodium hydroxide preparation, etc., and many more. Sodium hydroxide, first point. Sodium hydroxide is NaOH. Common name is caustic soda. Preparation of caustic soda is prepared commercially by the electrolysis of strong solution of sodium chloride NaCl, also called brine. मतलब जब हम लोग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को कोल्ड वाटर में जब हम लोग डालता है, मिक्स करता है, प्रिपरेशन करता है, तो उसको हम लोग ब्राइन बोलता है. ठीक है. जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज पार्टिकल्स एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ब्रेकडाउन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स फॉर्मेशन होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ NaCl प्लस वाटर इज कॉल्ड ब्राइन. क्लियर? ब्राइन. देन व्हेन NaCl प्लस वाटर, here NaCl is dissociated to form sodium ion and chlorine ion. Here sodium is positive and chlorine is negative. And in this topic, now see, in electrolysis process, here two electrodes, cathode and anode. Hydrogen is formed near the cathode and anode is and chlorine is produced near the anode. तो ये यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का हम लोग कलेक्शन कर सकता है. और यहाँ पे जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा ना, ये लिक्विड सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा. ठीक है. और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कलेक्ट कर लेगा. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग को कास्टिक सोडा बोलता है, जिसको हम लोग डिफरेंट केमिकल प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकता है. तो यहाँ पे NaCl प्लस H2O और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये फॉर्मेशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. Thus, as a result of electrolysis, hydrogen is evolved at cathode and chlorine at anode. The solution contains sodium hydroxide. It can be recovered from it. Hence, this process is also known as chlor-alkali process. Chlor-alkali means chlor for chlorine and alkali is a base, that is sodium hydroxide. Clear? Uses of caustic soda. Caustic soda is used in the manufacture of soap, paper, then artificial silk, and a large number of chemicals. Caustic soda is used for in the refining of petroleum and also of vegetable oils. It is used as a cleansing agent for machines and metal sheets, etc. तो ये डिफरेंट पर्पस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये था हम लोग का कास्टिक सोडा के लिए. थैंक यू.